Hello students, how are you all? A very warm welcome to this geography session, chapter 1, our environment. Learning objectives, natural environment, lithosphere, biosphere, biotic components, hydrosphere, ecosystem, abiotic components, atmosphere, man-made environment. So let's have some warm up. Answer the following questions. What do you see in the photo? What is the process of clearing the land by felling trees called? Why is it done? What is afforestation? Application skills. A solid crust of rocks forming the surface of the earth is called lithosphere. The word litho means rocks or stones and sphere means domains. So, the term lithosphere can be described as rock sphere. Lithosphere has an average thickness of about 100 km. It is irregular in shape and not smooth like a tabletop. It includes the various landforms as mountains, plains, plateaus, valleys, etc. The part of the ocean floor is also uneven and not smooth surfaced. Lithosphere provides us mineral wealth, forest, grasslands, agricultural land, and land for human settlements. Now let's answer the following questions on the basis of the above passage. First question is, what is lithosphere? So lithosphere is the solid rock surface of the earth. The solid crust of rocks forming the surface of the earth is called lithosphere. The second question is, what is the average thickness of the lithosphere? The answer is 100 km. 100 km is the average thickness of the lithosphere. And the third question is, what does the lithosphere provide us? So lithosphere provides us mineral wealth, forest, grasslands, agricultural land, and land for human settlement. Now let's start our chapter, which is our environment. The earth is the home to human beings and living organisms. This is possible due to the presence of favorable living conditions which make up their environment. Natural environment. The term environment refers to the surroundings or conditions within which a person, animal, or a plant exists. It is a combination of natural and man-made phenomenon. Natural environment means both biotic and abiotic conditions exist on Earth. Human environment refers to activities, creations, and interactions among different human beings. The natural elements such as mountains, rivers, vegetation, animals, etc. are created by nature. This is called natural environment. It includes the biotic and abiotic components. The man-made elements such as agriculture, industries, settlements, means of transport, etc. are created by human beings. Therefore, it is called man-made environment. Human beings develop these features to live comfortably in their environment. The two types of environment interact with each other. They change in course of time from place to place due to natural processes and human activities. So, नेचुरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो हमारे लिए नेचर क्रिएट करता है एंड एनवायरनमेंट वो होता है जिस लिविंग कंडीशन में जो लिविंग कंडीशंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अराउंड होती है. तो वो लिविंग कंडीशंस जो हमें डायरेक्टली नेचर ने दी जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स एंड व्हाटएवर द नेचर हैज गिवन अस इज द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही टाइप के कंपोनेंट्स आते हैं. Now let's focus on the biotic components. The biotic components comprise living beings like microorganisms, plants and animals including man. This is also known as living of biological environment. This is also known as living or biological environment. तो biotic environment वो environment होता है जिसके अंदर सारे living beings आते हैं जैसे कि microorganisms, प्लांट्स और एनिमल्स एंड इवन मैन भी. इसलिए इसको लिविंग या फिर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी कहते हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स. द एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट एंड कैरेक्टरिस्टिक. वाटर फाउंड इन ओशियंस, seas, rivers, lakes, streams, etc. are in the form of ice and snow together make the hydrosphere. It occupies a major part of the Earth's surface and has an importance of its own. More than 70% of the Earth's surface is covered with water. We cannot imagine life on Earth without water. Water is essential for all living organisms. Abiotic component वो होते हैं
जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स में ओशियंस, रिवर्स, सीज, एवरीथिंग, सब कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो कि नॉन लिविंग है। लिथोस्फेयर, a solid crust of rocks forming the surface of the earth is called lithosphere. The word litho means rocks or stones and sphere means domain. So the term lithosphere can be described as rock sphere. Lithosphere has an average thickness of 100 km. It is irregular in shape and not smooth like a tabletop. It includes the various landforms such as mountains, plains, plateaus, valleys, etc. The part of the ocean floor which is also uneven and not smooth surfaced. Lithosphere provides us mineral wealth, forest, grasslands, agriculture land and land for human settlement. तो लिथोस्फेयर अर्थ का वो हिस्सा होता है जो अर्थ का सरफेस बनाता है, और लिथोस्फेयर स्मूथ नहीं है जैसे कि टेबल टॉप। लिथोस्फेयर पे कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं वैलीज हैं, कहीं प्लेटोज हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ रफ सरफेस, इट इज नॉट स्मूथ। लिथोस्फेयर से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड मिलता है, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स भी लिथोस्फेयर पर ही होते हैं। Fact file. Recent satellite data indicate that the world's oil resources are likely to finish by the end of this century. जो recent satellite data है वो बता रहे हैं कि ऑयल वेल्स या फिर ऑयल रिसोर्सेज जो है वो इस सेंचुरी के एंड तक खत्म हो जाएंगे। हाइड्रोस्फेयर. Hydrosphere refers to all water bodies on the Earth's surface. It includes the water bodies like oceans, seas, rivers, lakes, etc. Water is found in 3 states, that is solid, liquid and gas. Earth is 71% surface is covered with water. Out of this, 97% is found in the oceans, seas, etc., which is saline, and the rest 3% is found in rivers, streams, lakes, ice caps or glaciers. Water is in a continuous motion on the earth, and this continuous motion is known as hydrological cycle. From hydrosphere, water gets evaporated into the atmosphere where condensation takes place, and then in the form of raindrops, water falls on the lithosphere. So in this way, water keeps on moving from one sphere to another. Hydrosphere is very important for all sorts of life. It provides a habitat to the marine life and food in the form of fish, shrimps, crabs, etc. International trade is carried on navigating the rivers and the oceans. Hydrosphere हमारा वो हिस्सा है जहां पर पूरी वाटर बॉडीज आती हैं, be it lakes, rivers, oceans and even ice caps. हमारी अर्थ पर 70% वाटर है। वाटर हमारी अर्थ पर एक साइकिल में घूमता रहता है। पहले इवेपोरेट होता है थ्रू वाटर बॉडीज, देन ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में कंडेंस होता है एंड वापस रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में लिथोस्फेयर पर आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल cycle. Now let's talk about the atmosphere. The Earth is a unique planet. Its capacity to support life makes it different from all other planets. The Earth is surrounded by an envelope of air which is called atmosphere. The atmosphere extends to about 1000 km from the surface of the Earth. The layer of air which surround the Earth is a mixture of gases which changes with altitude from the Earth's surface. The gravity of the Earth holds the atmosphere around it. Atmosphere also has dust and water vapor. Changes in the atmosphere affect weather and climate. The atmosphere also works as a shield of the earth to protect it from the harmful rays and scorching heat of the sun. हमारी अर्थ के चारों तरफ कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, एंड उस मिक्सचर ऑफ गैसेस से एटमॉस्फेयर बना हुआ है. इट्स काइंड ऑफ अ शील्ड ऑन दी अर्थ जो हमें सन की हार्मफुल रेज से भी बचाता है, एंड सारे वेदर फिनोमेना, बीट रेन एंड व्हाटएवर ऑल द वेदर फिनोमेना हैपेंस इन द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ. एटमॉस्फेयर की लेयर्स अराउंड अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर तक होती हैं. इन दी लूप, an ecosystem is a geographical area where plants, animals and other organisms as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. Ecosystem वो जगह है जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक लाइफ का बबल बनाते हैं. Biosphere. The three spheres, lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet to form a narrow zone of interaction, the biosphere, which supports life. Therefore, it includes the biotic and abiotic environment. Biosphere is a unique component of the earth. Outside the limits of biosphere, no life is possible. Biosphere is a beautiful part of the earth
which consists of a great variety of flora and fauna. Other planets do not have biosphere. Each organism in the biosphere has certain limiting conditions for its growth and survival. The types of plants and animals found in a particular region are related to the prevailing physical environment, known as habitat. All organisms living in a particular habitat depend on one another for their needs. All organisms in the biosphere interact with physical environment and with one another. बायोस्फीयर वो हिस्सा है जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों मिलते हैं, एक छोटा सा नैरो जोन बनाते हैं जिसको बायोस्फीयर कहते हैं, और इसी बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है. यहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं एंड उसी से उनकी लाइफ चलती है. इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. All plants, animals and human beings depend on each other and on the immediate surroundings of natural environment. There could be different ecosystems in different environments like deserts, mountains, dense forests, grasslands, rivers, oceans and even in ponds. इकोसिस्टम वो पार्ट होता है जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड ये इकोसिस्टम एक एनवायरनमेंट में अलग अलग हो सकते हैं. वो ओशन में भी होते हैं, लिथोस्फेयर पर भी होते हैं, एटमॉस्फेयर में भी होते हैं, वेयर एवर लाइफ एग्जिस्ट. दिस कैन बी अ पिक्चर ऑफ one ecosystem. Fact file. Ecosystem have different types of living organisms that interact with each other. These can be divided into three categories: producers, consumers and decomposers. All of them are important part of an ecosystem. The producers are the green plants. They make their own food. The consumers are the animals and they get their energy from the plants or from other organisms which eat the plants. The decomposers are organisms like bacteria and fungi that break down dead plants and animals into organic material that go back to soil, and that is where the cycle restarts. इकोसिस्टम वो एरिया होता है जहां पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. इनको तीन टाइप्स में बांटा जा सकता है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. कंज्यूमर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे एनिमल या प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं एंड वो उसको कंज्यूम करते हैं. एंड डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स जहां जो किसी भी डेड प्लांट या एनिमल को डिकम्पोज करते हैं ताकि वो वापस से सॉइल में मिल जाए. एंड वहीं पर ये जो साइकिल है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स की वापस से स्टार्ट हो जाती है. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लिविंग थिंग टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फूड चेन्स एंड मेनी डिफरेंट फूड चेन्स लिंक अप टू फॉर्म food webs. All the food webs are delicately balanced, so if one link in the web is destroyed, all the other organisms will be affected. एनर्जी जो है एक लिविंग थिंग से दूसरी लिविंग थिंग में ट्रांसफर होती रहती है और ये सब लोगों एक दूसरे से फूड चेन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और इसको फूड वेब भी कहते हैं क्योंकि कई लोग एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं और एक भी कई और के ऊपर डिपेंड कर सकता है. सो अगर इनमें से किसी एक का भी लिंक बीच में से टूटता है तो पूरी फूड वेब या पूरी फूड चेन डिस्ट्रॉय हो सकती है. मैन मेड एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट जो मैन ने बनाया. सो हाउ कैन वी से दैट? ह्यूमन बीइंग्स आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट इन विच दे लिव. दे आर टू एन एक्सटेंट influenced by the environment. They are also able to adapt and modify the environment according to their needs. With scientific and technological advancement, they have succeeded in controlling and dominating nature. So, man-made environment क्या होता है? जब इंसान अपने हिसाब से अपने एनवायरमेंट को चेंज कर ले अपनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की वजह से, वो मैन मेड एनवायरमेंट होता है क्योंकि वो एनवायरमेंट मैन ने खुद क्रिएट किया है. एंड दैट्स हाउ मैन आर डोमिनेटिंग द नेचर these days. This is the image of fishing. Think smarter. Should we take showers instead of a bath or use an automated dishwasher instead of doing dishes by hand? Now you think for this question. The interaction of human beings with the environment is complex in nature. It varies from place to place, from time to time. Human-environment interaction. In spite of all developments, the physical environment still provides human beings
with material needs. The primary activities, farming, fishing, forestry, and mining still provides food and raw materials without which advanced societies cannot survive and progress. तो हमें environment बहुत कुछ देता है, although हम अपने environment को अपने हिसाब से change कर सकते हैं, but हम environment के बिना survive नहीं कर सकते, no matter हम कितने भी advance हो जाएं. Fact file: Ellen Churchill, Semple 1863, was an American geographer. She studied the influence of physical environment on human activities and behavior in different parts of the world. Ellen Churchill एक अमेरिकन जोग्राफर थी और उन्होंने पढ़ा कि किस तरीके से हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट हमारी एक्टिविटीज पर असर डालता है अलग अलग दुनिया के हिस्सों में. वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स. द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5 every year. It is organized around a new theme every year. The theme for 2022 is Only One Earth, chosen by this year's host, Sweden. This year's topic highlights the need to live suitably in harmony with the nature by bringing transformative changes through policies and our choices towards cleaner, greener lifestyle. Recapitulation. Resources are the most vital means of satisfying various human needs. Three broad types of resources are natural, man-made, and human resources. We use different criteria to classify natural resources. Due to a rapidly growing population and increase in production, the need to conserve our natural assets is greater today than ever in the past. A sound understanding and utilization of our resources along with stress on improving the quality of environment can pave the way for sustainable development. Thank you class. Let's meet in the next chapter.